were registered, and about 2,17,000 exam functionaries we have deployed. So after the exam, we declared the result on 4th of June, and the detailed press release was also issued. And after that, there were some concerns of the candidates, and then we again clarified through a press note on 6th June. So the details were shared by the NTA. NTA is a very transparent organization, and at every stage we share the information with the candidates, whether it is the city intimation or whether it is the displaying OMR, taking the challenges, and whatever the challenges are there, then the experts are there to look into those challenges, and all the challenges are addressed and communicated through press media on our portal. So this year there were certain issues those are raised by the candidates, the like higher marks and so many toppers. So initially the result was like the 17 students were in the topper, but there was a physics question, and every year when we ask the challenges and then the questions are like, because of ambiguity, the answer key when finalized, so there are changes. So on that basis, 44 candidates have got marks from 715 to 720, and the toppers, number of toppers like 17 plus 44 हो गया था, 61 हो गया था. Then because this is a largest exam I think in the world or the country, which the competitive exam which happens in a single shift, about 24 lakh candidates and 4,750 centers. So this scale of this examination is one of the largest. And the issues at about 6 centers that affecting about 1,600 candidates, that because of the wrong distribution of question paper and issues there, one or two candidates, 2-3 candidates got the torn OMR, and they like a list key, they got less time because of the center superintendents. They should have given the 3 hours 20 minutes. Our instructions are, if any exam is started late, like in place of 2 o'clock, if it starts 2:30, so the exam should end not at 5:20, it should end at 5:50. And this has happened at most of the centers, but at some centers, the exam was conducted in such a way that they could not get enough time. So the candidates, the concerned candidates, they went to honorable high courts and given the representations that petition that they got less time. Say either they should be retest or they should be compensated for time. So we also replied in the High Court that we have found the grievance redressal committee of experts, and this committee will look into all the details of the time loss, including the reports from the center, the CCTV footage, and all that. So the High Court said they dismissed petition, and if the candidates are having further grievances, then obviously they can again go back to the court. So on that basis, our committee met, and they perused all the details of the centers, of the CCTV, and they found that sometimes center-wise there is a different time was lost, and they should be compensated for the marks. And there was a Supreme Court judgment in 2018 in CLAT case if there is this type of grievance time loss hota hai, so there is a formula, and on that basis compensation can be given. So the committee thought this is the way we can address the grievances. So during this grievances, their marks have been increased, and due to that some students, the concerns which have come to the media is because of the certain candidates have got marks which are they have come in the topper. 6 candidates have come in the topper, 2 candidates have 718 and 719 marks. So that is how the issue came, how candidate can get 718 and 719. So it is not because the
number of questions, +4, -1, but because of the scale formula, the numbers can be 718 and 719 also. So we have analyzed all the things and transparently, and then declared the result. So this problem was happened like out of 4,750 centers, it was limited to few 6 centers, and out of like 24 lakhs, it was only 1,600. So the integrity, etc., of this exam throughout the country was not compromised. And one issue which was happened in Savai Madhavpur, that because of wrong Hindi English distribution, we took the action immediately, and because by that time at every center candidates were inside, so the question paper in social media was I think around 4:28, 4:29 p.m. after the start of 2 hours 28 minutes later. So we said that there is no paper leak, and we reconducted the exam at that center with a different question paper, and it went smoothly. And then there were allegations from some other centers that there is a possibility of paper leak. So we all again analyzed our system and denied that report through the press release on 6th of May. So the whole exam process has been very transparent, and the integrity of the exam was not compromised at all, and categorically stated in our press release. So we assure all the student community that the exam has been done with full integrity. So this is a brief of the things. Thank you. Thank you so much for the detailed statement. If we still have questions, before you ask your question, kindly identify yourself with the name and also name of the organization. मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में कितने साल की मिलती है सजा? क्राइम के केसेस में सीबीआई कैसे करती है इन्वेस्टिगेशन? ऑर्गेनाइजेशन सर रिक्वेस्ट है, एक बार आप हिंदी में लार्जर ऑडियंसेस के लिए थोड़ा प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ हिंदी चैनल्स आर आल्सो हियर। और क्वेश्चंस इन हिंदी जी, और एक सवाल जो मैं दोबारा बता दें ताकि जी, और साथ ही में सर सवाल ये पूछना चाहेंगे कि एनटीए ने अपनी तरफ से तमाम नाम और ऑर्गेनाइजेशंस मैम मेरा नाम मिलन शर्मा है, मैं आज तक से हूँ। तमाम दलीलें जो एनटीए ने दी हैं पॉइंट वाइज, तो अब जब स्टूडेंट कम्युनिटी का ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा सा डगमगा रहा है और विपक्ष भी सवाल उठा रहे हैं, तो सर क्या आगे की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? क्या आप सोचेंगे कि इन एग्जाम्स को रिकंडक्ट करना चाहिए या नहीं सर? तो जैसे मैंने बताया कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें जो इशू आ रहा है ये 6 सेंटर्स और 1,600 कैंडिडेट्स का आ रहा है। तो इसमें जो ये इशू आ रहा है इसका हम लोगों ने पूरा एक कमेटी बना के एक्सपर्ट का एनालाइज किया और उनके ग्रीवांसेस एड्रेस किए कि जिससे जो 23 लाख कैंडिडेट्स हैं उनका भी इशू ना हो और जो इतने कैंडिडेट्स हैं उनके भी इशू ना हो। बट टू एले द फियर अगेन कि इसमें किसी को भी वो ना हो, तो एनटीए हैज़ डिसाइडेड कि जो एक हमने ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनाई थी उसने जो रिकमेंडेशंस दी थी उनको जो है एक हाई पावर्ड कमेटी एनालाइज कर ले। तो एक हमने कमेटी बनाई है, उस कमेटी इनको एक बार फिर से देख लेगी कि जो इनके ग्रीवांसेस थे 1,600 कैंडिडेट्स के उनके भी ग्रीवांसेस ना रहें, और जो 23 लाख लोगों के मन में है कि काफ़ी सारे टॉपर्स आ गए, ये आ गए, तो इनके भी इशूज वो ना हो। तो इस तरीके का निर्णय एक हम लोगों ने लिया है। थैंक यू सर। मैं अनिरुद्ध हूँ दैनिक भास्कर से। सर हाँ सर, मैं दैनिक भास्कर से अनिरुद्ध हूँ। सर ये जिस तरह का एग्ज़ाम है नीट का, ये एक तरह का सिस्टम ऑफ एलिमिनेशन का है, तो क्या इसमें ग्रे सिस्टम लागू करना ठीक था? नंबर 1। नंबर 2 कि ये जो क्वेश्चन के गलत विकल्प के चुने जाने हैं या वो सही 2 विकल्प होने के चलते कितने बच्चों को एग्जैक्ट नंबर दिए गए वो, और दूसरा कि जो टाइम लैप्स की वजह से जो आपने ग्रेस मार्क्स दिए हैं वो कितने ग्रेस मार्क्स हैं और वो कितने बच्चों को एक्चुअली में मिले हैं जिससे कि 6 तो टॉपर में पहुंच गए?
देखो, मैं फिर से आपको बताऊं कि जो ये एक एनटीए का और जितनी भी एग्जामिनेशन कंडक्शन बॉडी हैं, सभी जो है, हम तो आंसर की चैलेंज करते हैं, तो बच्चों से पता चलता है कि उनका फीडबैक और वो डिटेल में देते हैं कि ये विकल्प के बजाय ये विकल्प भी हो सकता है या ये होना चाहिए। और बाकी भी जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, तो उसके बेसिस पे ये हर साल एक सेट प्रक्रिया है। हम जेई में भी करते हैं, पिछले साल नीट में भी किए थे, और इस साल सबसे कम जो है केवल एक क्वेश्चन चैलेंज हुआ, मतलब एक क्वेश्चन अफेक्ट हुआ। तो ये मतलब जो सिस्टम है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बुक्स अलग रहती हैं, तो एक क्वेश्चन केवल चैलेंज हुआ, विच इज़ द लीस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ लाइक नीट एग्जामिनेशन इन पास्ट फ्यू ईयर्स। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो इनका जो बच्चों का जो 1563 बच्चों का हमने वो किया, तो इनके जो मार्क्स रिवाइज होके भी कई बच्चों के मार्क्स जैसे नेगेटिव में थे, तो नेगेटिव से नेगेटिव में ही रहे, -20 रहे, और कुछ बच्चों के मतलब टॉपर साइड में आ गए। और इनका जो 1563 का है, उसमें से 790 बच्चे क्वालिफाई किए। 790 बच्चे, मतलब उनका जो परसेंटेज है 50.54% है। जबकि जो टोटल जो 23,33,000 बच्चे अपियर हुए थे, उसमें से 13,16,000 बच्चे क्वालिफाई किए, उनका परसेंटेज 56% है। तो कहने का मतलब जो जिनको कंपनसेशन किया गया है, उससे ओवरऑल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में या किसी में फ़र्क नहीं पड़ा। और जो इनका एवरेज भी है, जो बिफोर कंपनसेशन 164 नंबर का था और आफ्टर कंपनसेशन 192 नंबर का था। और जो टोटल 23 लाख लोग हैं, उनका जो एवरेज मार्क्स है वो 217 है। तो कहने का मतलब इनका जो कंपनसेशन के बाद भी एवरेज मार्क्स कम रहता है। अब इशू ये आता है कि केवल एक सेंटर पे इतना क्यों आया, तो उस सेंटर को भी हमने एनालाइज किया। उसका जो एवरेज मार्क्स थे वो 235 थे, मतलब जो 23 लाख बच्चों का एवरेज है उससे उनका ज़्यादा था। तो कहने का मतलब रिलेटिवली दी स्टूडेंट्स वहाँ पे बेटर थे, जो मतलब हाई स्कोर कर सकते थे, और हाई स्कोर जिन्होंने बिना कंपनसेशन के भी किया। तो इस तरीके की चीजें जो है आपके। सर, ये जो मैं जो पूछना चाह रहा था कि ये कंपनसेशन मार्क्स कितने से कितने दिए गए हैं इन बच्चों को, मतलब वो नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं? जैसे क्वेश्चन के वाले पर ग्रेस मार्क्स 5 था, क्वेश्चन वाले पर सबका अलग रहता है। तो वो रेंज कितना है? रेंज मैं आपको बता दूंगा, मतलब बट ये जो है हर बच्चे का जो है एक अलग, उस पर उनकी जो आंसरिंग एफिशिएंसी है ये है, तो इसका जो है सबका एक अलग अलग वो है। इसका सिस्टम जो है, जो कोर्ट के ऑर्डर्स में है कि मतलब उसकी आंसरिंग एफिशिएंसी कितनी है, ये कितना है, तो सबका जो ग्रेस मार्क्स है वो अलग होता है। इसी तरह से जो आपने क्लेट की बात की है, क्लेट का जो वो मतलब फॉर्मूला अपनाया गया, तो वो एक ऑनलाइन एग्जाम है और ये एक ऑफलाइन एग्जाम था जिसमें लिखित में केवल डॉट बनाना था। तो उस वाले सिस्टम को ऑफलाइन के लिए कैसे अपना लिया गया? पैटर्न एक है, पैटर्न मतलब टाइम लॉस का है, कॉन्सेप्ट टाइम लॉस का है, तो उसके आधार पे बनाया गया। और फिर जैसे मैंने बताया कि इसके लिए जो है इसको फिर से एक रिविजिट करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई है जो पूरा इसको देखेगी कि जो ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी थी उसके बेसिस पे एक बार फिर से उसको जो है पूरा एग्जामिन करेगी। थैंक यू। तो क्या रिजल्ट फिर से डिक्लेयर करेंगे री एग्जाम करके? देखो, इशू जो है केवल 1600 लोगों का है। ये 23 लाख जो बच्चे अपियर हुए थे, 24 लाख में से 23 लाख बच्चे जो कुछ अपियर हुए थे, इसमें से केवल 1600 बच्चों का इशू है। 4750 सेंटर के बजाय ये 6 सेंटर का इशू है। तो हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और इसको हमारी कमेटी एग्जामिन करेगी और उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके ऊपर फिर हम निर्णय लेंगे। Just a minute, one by one, please. आप अपना सवाल लें, नाम बताएं। Sir, can you please elaborate on the mandate of this committee you have now formed? What all this committee will look into? So this committee will look into the issue of this compensatory marks, which has been recommended by the Grievance Redressal Committee. So this committee's mandate is limited to look into the issues of the candidates who have lost the time. तो रफली 1600 बच्चों का एंड 6 सेंटर्स का जो इशू है ये उसी तक ही लिमिट है। बाकी एग्जाम में कहीं कोई वो नहीं है। एंड
there is no the problem is not disproportionate, and what we have like seen it out of proportion. So this is limited to the 1,600 candidates and 6 centers. Yes, sir. There are some other centers also complaining that the students didn't get the. Can I please have your name and organization? Malayalam newspaper. Sir, there are complaints after this. Whatever complaints we have received till the declaration of results, so this committee will look into the grievances of those candidates. Sir, We have CCTV and all the details. In 20 seconds, let's find option trades under a budget. Open the Upstocks app. Go to affordable options under Discover. Pick a trade under 5K or 10K. Upstocks, the